प्रॉब्लम में एक सैंपल दिया जिसका मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, एसटीपी पर है, आरएमएस स्पीड निकालना है। तो इसका आरएमएस स्पीड निकालने के लिए इफ़ वी टेक द 3RT यानी आर लेंगे तो इट इज़ अ मॉलिकुलर वेट लेना पड़ेगा, और मॉलिकुलर वेट के लिए इस सैंपल का मास जो कि 0.177 ग्राम है, इसको मैं यदि डिवाइड कर देता हूँ वॉल्यूम से, पर यूनिट वॉल्यूम, एंड मल्टीप्लाई बाय 22400, then this will be the molecular weight in the gram, and molecular weight is a 0.177 multiplied by 22.4, and that is a 4 gram per mole. Now we put the value in this equation 3, it is a 8.31, and multiply by the STP means it is a 273, and molecular weight is a 4 gram per mole, so it is a 4 into 10 raised to power minus 3. If we calculate this term, then it is a 1304 meter per second. So I think first option is correct. Number of degree of freedom of the molecules, यानी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है, और भी हाइड्रोजन के 1 cc के लिए। तो वेरी फर्स्ट वी want to find the number of molecules, because we know the each molecules have 5 number of degree of freedom. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्यों ना मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रो नंबर से पर सीसी मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें, it is divided by, because we know in this volume the number of molecule is equal to the Avogadro number, so it is 6.023 into 10 raised to power 23 divided by 22400. But we know the number of degree of freedom of each molecule is a 5, so 5 is multiplied by 6.023 into 10 raised to power 23 divided by 22400. So it is a 10 raised to power 20, and it is a almost 30 by 22.4, it is a 1.34. So correct option is the third one. The gas molecule has degree of freedom for translatory. For translatory is a 3. For rotation is a 2, and vibration के लिए भी कितना है, that is a 2. In total energy इन तीनों degree of freedom पर divide है, ratio is a 3:2:2. So total energy 3:2:2 means it is a 7. So total energy कितना part उसका rotation के लिए divide है, so the rotation के ratio it is a 2 and the total is a 7, so 2/7 times of the total energy is equal to the rotational kinetic energy, so 2/7 factor means the correct option is the fourth one. In the next problem, it is a pressure is a P, absolute temperature is a TA, and mass of the gas is a capital M. Then we know according to ideal gas equation, if the pressure is a P, then it is a PV, that is a mu into R into T. T is the temperature of the gas. And the number of mole की बात करें तो it is a PV equal to the mass of the gas upon molecular weight is the number of mole, and that is R into T in the first situation. In the second situation, we don't know what is the pressure, but the volume becomes V by 3, and the 2m is adding, 2m को add किया, so the total mass is a 3 times of the initial mass, and the molecular weight remains same, but the R and the temperature is a TA by 3. If we divide P by P dash is equal to 1/3, that's why P dash equal to 3 times of the initial pressure. So final pressure of the gas is a 3 times of the P. And we want to find the number of air molecule find करना है,
In the room the capacity means volume given hai, and temperature is given and pressure is given. Then we know the number of mole is equal to PV by RT. The number of mole is a PV by RT. That means the number of molecules is equal to mu into Na. Therefore the number of molecule equal to pressure into volume. Therefore it is a pressure is a 1.05 into 10 raised to 5 1 atm, and volume is a 25 in the SI system. R is a 8.31 and the temperature is a 300, and that is multiplied by Avogadro number. So it is almost 25 and 25 cancel. So it is a 10 raised to power only 3, and that is multiplied by 6 into 10 raised to power 23. So it is a 6 into 10 raised to power 26 are the number of molecule of oxygen, nitrogen, water जो भी है उसका 26, 6 into 26, 10 raised to power 26. So the first option is correct. In this problem the temperature of gas is at 250. It is given closed in a closed vessel. That means the volume is a constant. Now the temperature is increased by 1 Kelvin, then increase in the pressure. Then we know pressure is a proportional to T. That's why delta P by P into 100 is a percentage change in the pressure equal to the percentage change in the temperature. And we want to find the percentage change in the pressure. So percentage change in the temperature is a 1 Kelvin in a 250 into 100. So it is a 400 by 1000 means it is 0.4%. So the correct option is the first one. Ideal gas is found to be obey the additional law. It is a Vp square is a constant. And we know the ideal gas equation is a PV equal to mu RT. Then we want to find the temperature and volume. So we eliminate the pressure, and pressure is proportional to T by V. We put the value of the T by V square into V is equal to constant. Then it is a T square by V is a constant. That means T1 square V1 divided by T2 square V2, because T square is proportional to V. The initial temperature is given. Initial temperature is suppose T. Final temperature is a T dash. We want to find the T dash, and the initial volume is a V and final volume is a twice of V. So the T dash square is equal to twice of T square. Therefore T dash equal to final temperature is root 2 times of the initial temperature. So final temperature is a root 2 times of the initial temperature. 1 mole of the ideal gas, it is given 1 mole of the ideal gas, and it obeys the some rule, which rule is a V is a proportional to T to the power 2 by 3. If V is proportional to K T to the power 2 by 3, then what is the work done? Work done, we know the work done is equal to P dV, and for the 1 mole of the gas it is a PV equal to RT. PV equal to RT means P equal to RT by V. Then work done is equal to RT by dV by V. If we differentiate this equation, dV equal to K means 2 by 3 K T to the power minus 1 by 3, that is dt.
then dV by V term is equal to 2 by 3 and k से k cancel out हो जाएगा and it is a dt by t. Now put this value in the work done. It is a 2 by 3 r in the bracket t and dV by V is equal to dt by t. So t cancel with t and the work done is equal to 2 by 3 times of r and multiply by delta t. Then we know 2 by 3 r is a 8.31 and multiply by delta t. Delta t is given, it is 30 degree centigrade or 30 degree Kelvin. So the work done is equal to 166.2 if we multiply that joule. So the correct option for this is a 166.2 joule. Two glass bulbs of equal volume are connected by narrow tube and filled with the gas at the 0 degree centigrade and pressure is a 76 centimeter of mercury. That means number of mole on each bulb is mu. Mu is equal to P pressure, V volume and R by T. T is the initial temperature. The number of mole in a two glass tube is twice of PV by RT. Now the temperature of one of the bulb is placed at the 62 degree centigrade. 62 means it is a 273 plus 62 and that is equal to 335 Kelvin. Now number of mole in a one bulb plus number of mole in a second bulb. But the one thing is very common that the pressure in the both the bulb will be same because they are connected with the narrow tube. So pressure and volume is a V, volume is again V, but the temperature in the one of the bulb is a 273 and other is a 335. इसमें टेम्परेचर चेंज किया दूसरे बल्ब में, इसीलिए दोनों में प्रेशर सेम चेंज होगा जो भी होगा. सो वी कैन से ट्वाइस ऑफ आर कैंसिल कर लें. टी टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर इज आल्सो 273. So it is 2 by 273 is equal to P dash. R भी कैंसिल कर लें. It is 1 upon 273 plus 1 upon 335 because the दूसरे बल्ब को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया है. Then we can calculate the P dash. P dash is equal to or P dash multiply by 273 plus 335 divide by 273 into 335 and that is equal to 2 upon 273. So P dash equal to 2 into 335 and multiply by the initial pressure जो कि यहाँ पे प्रेशर जो था that is a 76 of mercury and that is divided by 608. If we calculate the P dash, then P dash equal to 83.75 of centimeter of mercury. मर्करी की टर्म में आंसर दें तो इट इज़ आंसर इज़ 83.76. सो टेम्परेचर बढ़ने से दोनों का कॉमन प्रेशर जो आएगा दैट इज़ 83.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. ग्लास कैपिलरी ट्यूब विच इज सील्ड एट द बोथ द एंड्स 100 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट मीन्स एक ट्यूब जिसका टोटल लेंथ इज़ 100 सेंटीमीटर है, मिडल में 10 सेंटीमीटर पे मर्करी है एंड दो पार्टीशन हो रहे हैं. The two end and the tube are equal length. It means the both side this is a 45 and that is a 45 plus 45 centimeter, it is total 90 plus 10 100 centimeter. Horizontally रखा है and the initial temperature 76 centimeter of mercury है. The tube is kept horizontal such the air condition and 0 degree and दोनों का टेम्परेचर इनिशियली 27 है, लेंथ भी इक्वल है. नाउ इट इज़ 27 वाला 100
27 पे किया गया है और 27 डिग्री वाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया है. So we can say initial pressure into volume divided by R into T initial temperature, and the number of mole of the air in this is the same and दोनों साइड सेम होंगे. So suppose the pressure in the first part is a P1 V1 upon R and the T1 is a 273. Similar, PV by RT, initial temperature is a 300 is equal to P2 V2 by R and the T2 is a not a 273, it is a 400. Then we know if the temperature को यदि कम किया गया है, टेम्परेचर यदि कम किया है तो इनका वॉल्यूम चेंज होगा और अकॉर्डिंग वॉल्यूम दैट इज़ अ 45 माइनस एक्स इंटू एरिया, इट इज़ अ वॉल्यूम एंड जितना वॉल्यूम कम होगा उतना इसका इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा है. 45 प्लस एक्स इंटू ए. बट वन थिंग इज़ कॉमन कि इन दोनों साइड आफ्टर टेम्परेचर चेंज करने के बाद प्रेशर सेम रहेगा. प्रेशर सेम रहने के लिए P1 इज इक्वल टू P2. यदि हम दोनों को इक्वेट करते हैं देन इट इज़ अ 45 माइनस एक्स अपॉन 273 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स अपॉन 400 और इसे कैलकुलेट करते हैं तो x इज इक्वल टू 8.49 सेंटीमीटर. इसके अलावा 8.49 और ऑलमोस्ट 8.5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगा, इंक्रीज हो जाएगा जिधर टेम्परेचर ज़्यादा किया है. इस साइड इंक्रीज हो जाएगा, इस साइड डिक्रीज हो जाएगा. और यदि इसका फाइनल प्रेशर कैलकुलेट भी करना है सो तो P2 इक्वल टू P1, दोनों प्रेशर सेम रहेंगे एंड P2 इक्वल टू P1 इक्वल टू, यदि मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को कैलकुलेट करूं देन P2 इक्वल टू P1 इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम. प्रेशर इनटू वॉल्यूम इट इज़ अ 45 था इनिशियली इनटू एरिया जो भी 76 इज अ प्रेशर, 45 वॉल्यूम के अकॉर्डिंग and the 273, this is 273 divide by 300 initial temperature and to multiply by, it is 45 minus x means 45 minus 8.5. तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रेशर जो है फाइनल प्रेशर जो दोनों साइड है P2 इक्वल टू P1 and that is 85.25 centimeter of mercury. I again repeat, नंबर ऑफ मोल दोनों साइड सेम होंगे तो उसके अकॉर्डिंग PV इक्वल टू RT दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है. जिस साइड टेम्परेचर डिक्रीज होगा उस साइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिस साइड टेम्परेचर बढ़ेगा उस साइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 8.5. और इस 8.5 को यदि मैं पुट करके फाइनल प्रेशर निकालूं जो कि दोनों साइड सेम है तो दैट इज़ 85.25 जो कि इनिशियली 76 था. इट इज़ आल्सो सिमिलर, इसमें भी एक कॉलम है HG का 10 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम है जो कि ट्यूब के जस्ट मिड पर है. टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब इज़ 100 सेंटीमीटर. इसका ना शुरू में 10 सेंटीमीटर का मर्करी का जो कॉलम है वो मिड पर है, इधर की तरफ 45, इधर भी 45. अब ऐसा बोला गया कि इसे जस्ट वर्टिकल कर लिया गया है. वर्टिकल कर लिया गया इट मीन्स द मर्करी कॉलम जो डाउनवर्ड आएगा वो कुछ 45 जो लेंथ था वो 45 माइनस ऑफ y हो जाएगा और इधर 45 प्लस y हो जाएगा और इस साइड 45 माइनस y हो जाएगा बिकॉज दोनों का प्रेशर सेम नहीं होगा. सेम पहले की केस में जब हॉरिजॉन्टल था तो सेम था, बट यहाँ इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस यानी B और A के प्रेशर का डिफरेंस डिफरेंट होगा, या यूँ कहते हैं कि PA
minus Pb equal to 10 centimeter of the mercury level. First of all, if the P initially atmospheric pressure है P naught 45 into area by R into T, temperature same रह रहा है यहाँ, then it is a PA is a L minus Y or a 45 minus Y, 45 minus Y into area upon R into T, and that is equal to pressure of the B into 45 plus Y into area upon R into T. Then we can say pressure of A minus pressure of B equal to 10 centimeter of mercury, and the pressure of A equal to, it is 76, so it is a 45 into 76 divided by, that is a 45 minus Y, and it is a 45 into 76 divided by 45 plus Y, that is a pressure difference equal to 10 centimeter of mercury. If we solve this equation, then Y equal to 3 centimeter. I again repeat कर दूं तो पहले का P1 V1 upon RT, number of mole in the left hand side is equal to in the right hand side, but जब इसे वर्टिकली ऊपर किया तो प्रेशर ऑफ द ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ द बी, एंड द डिफरेंस इज अ 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, एंड द नंबर ऑफ मोल इक्वल है तो P1 V1 अपॉन RT को इक्वल किया, टेम्परेचर भी पूरे का सेम रह रहा है, सो प्रेशर इन द ए इज ग्रेटर, इट मीन्स ग्रेटर होने का मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो है द डिफरेंस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. सो यदि कैलकुलेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सो इट इज़ y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर.